Bismillahirrahmanirrahim. Trigonometric integrals. And this we discussed already in the last lecture. Uh, how to evaluate the trigonometric integral and integration like that. So now we are discussing about the strategy for evaluating the integral of sine raised to the power m and cos raised to the power n dx. So if the power of cosine is odd, n is equal to 2k plus 1. This is general form to write the odd numbers. Save one cosine factor and use cos square x is equal to minus 1 minus sin square x to express the remaining factor in term of sine. इसी फॉर्म में अगर आ जाए हमारे पास साइन की पावर एम एक्स और cos की पावर एन, अगर इसका पावर ऑड है कोसाइन का, तो आप इसको इस फॉर्म में जनरल लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की पावर एम cos x की पावर 2k plus 1 d of x. So we can write this is sin x की पावर m and this is cos x square की पावर होल k, और एक cos यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मतलब इसको स्प्लिट किए इन दोनों को, and this is x d of x. So this we can write this sin x की पावर m as it is, और cos square x जो है ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर लें, cos square x is equal to 1 minus sin square x से होल पावर k and this is cos of x dx. इसको इस फॉर्म में जनरल हमने कन्वर्ट कर देना है. एक cos हमने cos of x d of x के साथ ही रहने देना है. जब हम सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं then substitute u is equal to sin of x, ये इसका जनरल तरीका है. फिर इसका डिफरेंशियल ले लें और इस इंटीग्रल में पुट कर लें और इसका इंटीग्रेशन ले लें, सिंपल हो जाएगा. फिर इसको रीसब्स्टिट्यूट कर लें u is equal to sin of x. Strategy number B. If the power of sine is odd, that is m is equal to 2k plus 1, save one sine factor and use sine square x is equal to 1 minus cos square x. यहाँ पे power of cosine is odd, and here if the power of sine is odd, then express the remaining factor in term of cosine. So this can be we can write sine x to the power 2k plus 1 cos n of x d of x, and this is equal to sine square k whole k. We can write because it's multiplied with this power. So cos n cos x power n and sine of x d of x. So this is equal to, because sine square x is equal to 1 minus cos square x and whole power is k, and this is equal to cos n of x and sine of d of x. Then substitute this one, u is equal to cos of x. अगर इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे u is equal to sin of x सब्स्टिट्यूट कर लें, यहाँ पे आपने cos of x u is equal to cos of x सब्स्टिट्यूट करना है. फिर इसका डिफरेंशियल लेना है, फिर वही प्रोसीजर है बिल्कुल जो पिछले एग्जांपल में हमने रिपीट किया हुआ. नोट दैट इफ द पावर ऑफ बोथ साइन एंड कोसाइन और ऑड, दोनों अगर ऑड है, ये पॉसिबिलिटी कि दोनों पावर ऑड हो हमारे पास, देन आइदर ए आर बी कैन बी यूज. तो फिर आप लोगों की मर्जी है, इसमें से ए पार्ट आप यूज़ करना चाहिए ये जो स्ट्रेटजी है, या बी पार्ट वाली जो स्ट्रेटजी है ये यूज़ करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटजी सी, if the power of both sine and cosine are even, अगर दोनों even है, use the half angle identities. This is the half angle. Sin square x is equal to 1 by 2 1 minus cos 2x, and cos square x is equal to 1 by 2 into 1 plus cos 2 of x. क्योंकि हमारे पास sin square x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, तो इसको हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करके
और उसके इंटीग्रेशन आसान बना कर इवेलुएट कर सकते हैं. It is sometimes helpful to use the identity sin x into cos of x is equal to half of the sin 2 of x. तो ये भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है और ये इम्पोर्टेंट हाफ एंगल आइडेंटिटी है. Sometime you can use these identities to evaluate the integral. Example, find the integral sin x raised to the power 5 cos x square dx. So we can write this integral. यहाँ पे देखना, the power of sin is odd. The power, so we use the strategy 1. So we can write this sin 5 is equal to sin square x into whole square, and this is the cos square x, और x साइन यहाँ पे हमने लिख लिया. सो इसको अगर आप देख लेना तो ये साइन 4 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन पावर 1 है, तो ये टोटल ये साइन की पावर 5 हो जाएगा. साइन एक्स एस टू पावर 5 हो जाएगा. सो नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर लें, और ये जो पार्ट है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. Now using the substitution u is equal to cos of x, so we have the differential of du is equal to minus sine of x and d of x. So because the differential of cos of x is minus sine of x into dx, so substitute here 1 minus cos of x. What is cos of x? This is u. So this is u square whole square, and this is cos square, so u square, and sine x dx, replace this one by the du. du is equal to minus sin x dx. ये जो माइनस है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास ये बाहर आ गया माइनस, ये माइनस डी यू. सो इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बी इक्वल टू दिस इज यूज. इसको सिंप्लीफाई कर लें, ओपन कर लें इस स्क्वायर को, और साथ में ये मल्टीप्लाई कर लें, यू स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लें. सो दिस विल बिकम minus time integral of this u square minus 2u4 plus u की power 6 into du. Now applying the integral on each term, so the integral of u square du is u की power 3 divided by 3, because the power of this function we add it, and it's और इसको डिवाइड भी करना है. ठीक है, पावर रूल यूज करना है हमने इसमें, तो ये u क्यूब हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा. फिर ये पावर एक इंक्रीज कर लें, इसमें 5 हो जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड कर लें. फिर इसका एक पावर इंक्रीज कर ले और इसे डिवाइड कर लें, एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. Now using back substitution, u is equal to cos of x, so we have minus 1 by 3 cos cube x plus 2 by 3 cos 5x minus 1 by 7 cos 7x plus c. Strategy for evaluating the integral of the form tangent mx and tangent secant nx. अगर हमारे पास इस तरफ कम्बिनेशन आ जाए, प्रोडक्ट और रूट में आ जाए, और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है दोनों. If the power of the secant is even, if this power is even, that is n is equal to 2k, where k is greater or equal to 2, save factor of secant square and use this identity secant square is equal to 1 plus tangent square x to express the remaining factor in terms of tangent x. आपको ये साइन स्क्वायर सीकन स्क्वायर एक्स एक टर्म आपने बिछाना है इधर साथ साथ में. ये क्यों हम इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो टेंजेंट का जो डायरेक्ट होता है वो सीकन, ये जो डिफरेंशियल हम ले लेते हैं टेंजेंट का, ठीक है, तो ये सीकन इंटू टेंजेंट आ जाते हैं हमारे पास. तो ये इंटीग्रल हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स और सीकन 2kx dx is equal to integral of tangent की पावर m
and secant square की power whole k minus m, and this is the secant square x dx. इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये एज इट एज आ जाते हैं। और ये अगर आप 2k-2 आ जाएगा ना, और यहाँ से फिर ये दोबारा मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास secant 2k आ जाता है। तो ओवरऑल हमने यही प्रोसीजर को फॉलो करना है अगर हमारे पास इस तरह कम्बिनेशन बनता है। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस टेंजन m, टेंजन की पावर m, and this is secant square is equal to 1 plus tangent square x, and this is the secant square x. Now substitute u is equal to tangent of x. ये जो टेंजन आपके पास आ रहा है ना, इसको यू का पुट कर लें, और बाकी जो है फिर वही इंटीग्रेशन आ जाता है हमारे पास यू की फॉर्म में। तो पावर इंक्रीज कर ले, इस पर डिवाइड कर लें, और साथ में कांस्टेंट सी आ जाएगा। नाउ इफ द पावर ऑफ द टेंजन इज ऑड, दैट इज टेंजन के ऊपर है दोनों, टेंजन और सीकन, सीकन इवन है, टेंजन ऑड है। Say a factor of secant x tangent x and use tangent square is equal to secant square x minus 1. This is the identity. The same identity as secant square is equal to 1 plus tangent square. To express the remaining factor in terms of this secant x, so we can write this integral in the form tangent to the power k plus 1 secant n d of x. So this will be tangent square whole power k secant n minus 1 एन टू सीकन, क्योंकि सीकन n माइनस वन और सीकन ये हम लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, जिससे वापस सीकन की पावर n आ जाता है। एंड दिस इज दी टेंजन x dx, एक ये यहाँ पे टेंजन की पावर 2k प्लस 1 है, इसको स्प्लिट कर ले, टेंजन की पावर 2k ये आ जाएगा हमारे पास, और एक टेंजन रह गया ना यहाँ पे, तो इसको हम इधर लिख लेंगे, ये दिस इज द टेंजन ऑफ x. So now using this identity, tangent square is equal to secant square x minus 1. So this is equal to secant square x minus 1 whole k, and this is secant n minus 1 x, secant x and tangent of x into d of x. Now using the substitution u is equal to secant x, and then evaluate the integral by previous procedure. For example, find the integral of this tangent 5 theta and secant 7 theta and d theta. So we can write this tangent 5 theta in the form this tangent 4 theta, secant 6 theta, and this is 6 theta and tangent theta. यहाँ पे एक टेंजेंट ले लिया यहाँ से, और एक secant हमने ले लिया. Now using the identity secant square, this is the tangent की power 4. So tangent की power 4, this we can write in this form tangent x square and whole square. Okay, so what is this? This is equal to, using the identity, because tangent square x is equal to secant square theta minus 1, so a whole square आ जाएगा, and this is the secant theta, and this is secant theta, tangent theta, and d theta. Now substitute using this substitution, u is equal to secant theta, u is equal to secant theta. So the differential of secant theta as secant theta and tangent theta d theta. So just using the secant theta, tangent theta, d theta, and secant square theta is equal to, which is u is equal to secant theta. So this will become the u square minus 1 whole square, and यहाँ पे u की पावर 6 आ जाएगा, और इस टर्म की जगह क्या पुट कर लें, यहाँ पे ये du पुट कर लें. Now इसको इसको इस this is the u square a square minus b square formula. So expand this formula and multiply u की power 6
and then apply the integration. Now using the simplification of this form is given in this equation in this form. So now apply the integration on each term. So we can get this is u की power 11 divided by 11 minus 2 u की power 9 divided by 9 and u की power 7 power एक increase कर लें और एक इसको divide कर लें, and this is the constant of integration. And then using back substitution, u is equal to secant theta, so this integral can be written in this form. Now to evaluate the integral of the form sin mx cos nx dx and b integral of sin mx sin nx dx, इसमें दो टाइप्स के इंटीग्रल आ जाते हैं हमारे पास, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स। साइन और कॉस का कम्बिनेशन है, लेकिन इसका जो एंगल है वो डिफरेंट है, और साइन साइन का कम्बिनेशन आएगा हमारे पास इस तरह जाता है, लेकिन इसका एंगल डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज साइन 5x एंड साइन 2x, और इसका इंटीग्रेट करना हो तो इसके लिए हम ये सी पार्ट कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स हो, ये कॉस और साइन का कम्बिनेशन है, कॉस और साइन का कम्बिनेशन है फर्स्ट वन। सेकंड वन इज साइन का इंटीग्रल है, और थर्ड वन इज जो है वो कॉस का इंटीग्रल है। तो हमने ये आइडेंटिटी यूज करना है, साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी। साइन और साइन आ जाए, डिफरेंट एंगल है, ए एंड बी आर डिफरेंट, so 1/2 and this is cos a minus b minus cos a plus b, and cos a cos b इस तरह जाए तो ये 1/2 cos a minus b plus cos a plus b। तो ये इम्पोर्टेंट, यहाँ से ये सम जो है प्रोडक्ट जो है इसको कन्वर्ट किया हुआ है इन सम और डिफरेंस। So this is the converting, this is the formula to converting the sum or the product of sine cosine function into the sum or difference। तो यहाँ से फिर आसानी से हमारे पास साइन और कॉस का इंटीग्रेशन है, लेकिन इसके कम्बिनेशन जो आ जाते हैं हमारे पास साइन ए साइन बी, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इसके लिए। फॉर एग्जांपल इवेलुएट दिस साइन 4x cos 5x, यहाँ पे ये एंगल डिफरेंट है, 4x है, यहाँ पे 5x है, तो इसको इंटीग्रेट करना हो so using this sine and cos combination, sine and cos, this is sine and cos, this sine a cos b, which is equal to 1/2 sine a minus b plus sine a plus b. So we can write this integral 1/2 sine 4 minus 5x plus sine 4 plus 5x using this identity. So we can write this 1/2 over here, and this is sine minus sine of x plus sine 9x d of x. Now applying the integral on both terms, so integral of sine is minus cos of x, so this minus and minus become positive, so this will be equal to cos of x, and the integral of sine 9x is basically the cos 9 of x, and इसको डिवाइड करना है क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रल आ जाते हैं, इंटीग्रल ऑफ जनरल फार्मूला हमारे पास है कि साइन के एक्स का जो इंटीग्रल है एन टू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/k time integral of this, so this is minus 1 by cos kx, ये आ जाता है प्लस सी। क्योंकि डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरह फंक्शन हो तो हम दोबारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं बाय यूजिंग द चेन रूल। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हमने इसको बाहर लेके आना है, 1 बाय डिवाइड कर देना है, इस तरह ये प्रोडक्ट में आ जाता है कि कांस्टेंट, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट में आ जाता है। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो ये इसमें डिवीजन में आ जाएगा। सो दिस इज minus 1/9 cos 9x plus c। ये अगर देखना हो कि ये डिवीजन में कैसे आता है,
तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो इंटीग्रल है ना cos 9x, तो इसका जो dx है यू पुट कर ले इसको कैलकुलेट करना हो तो इसको यू पुट कर ले 9x को, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल ले रहे तो ये 9 डी यू डी एक्स आ जाएगा, साथ में 9 भी आ जाएगा, तो 9 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर ले, तो वहाँ से ये हमारे पास ये डिवीजन में आ जाता है। Now section 7.3 trigonometric substitution. In finding the area of circle or in ellipse or integral of the form is integral of a square minus x square into the root dx arises when a is positive. If it were integral of the form substitution u is equal to a square minus x square would be effective, but as it stands, integral of a square minus x square dx is more difficult. If we could change the variable from x to theta by substitution x is equal to a sine theta, then the identity 1 minus sine square theta is equal to cos allows us to get rid of the root sign, because क्योंकि ये इस तरह अगर हमारे पास इंटीग्रल आ जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है हमारे पास फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए साथ मल्टीप्लिकेशन में dx, फंक्शन फंक्शन का कोई जो भी है पावर है जो भी है, लेकिन साथ में इसका डेरिवेटिव और dx होना चाहिए, तब हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में हमारे पास ये फंक्शन है x का डेरिवेटिव dx है, लेकिन इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो -2x है, और -2x यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हम -2x इंटीग्रल के अंदर। अगर ये इंटीग्रल इसी फॉर्म में है x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज द पावर द फंक्शन एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1/2 तो ये आसानी से हम बना सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म जिसका इंटीग्रेंड जो है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो और फिर हमने एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए टेंजेंट थीटा, ए सेकंड थीटा, इस तरह की सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके इसको हमने देन यूजिंग द आइडेंटिटी 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, or 1 or sec square theta is equal to 1 plus tangent square theta, and so on. इसी इंटीग्रल में अगर x is equal to a sin theta पुट कर लें इसमें, so this integral become this is a square minus x square, so this is equal to a square minus x की जगह रिप्लेस कर ले a sin theta, this is a square sin square theta, a square कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 minus sin square theta, and 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, so ये स्क्वायर जो है ये इसको कैंसिल आउट करके ना a cos theta आ जाएगा हमारे पास, तो ये सिंपल हो जाता है, और इसका cos का इंटीग्रेशन हमारे पास है। सो टेबल ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्रेशन अगर इसी फॉर्म में, इसको हमने याद रखना है, अगर हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और आइडेंटिटी जो हमने यूज़ करना है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ करना है। एक्सप्रेशन अगर इसी फॉर्म में हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, तो इसके लिए हमने यूज़ करना है एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, और अगर इस तरह है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो यहाँ पे हमने एक्स इक्वल टू ए सीकन थीटा, इन दोनों में फ़र्क है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड हियर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए सीकन थीटा and here x is equal to s sin theta हमने utilize करके, and then using these identities to evaluate that integral. For example, evaluate this integral. यहाँ पे इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली कैसे इसको कर लें इस फंक्शन का, तो कोई पावर है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, दैट इज this is the integral of a square minus x square, इस फॉर्म का इंटीग्रल है, दिस इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरह इंटीग्रल हमारे पास जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं,
x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर लेते हैं, ए साइन थीटा. So let x is equal to, but here a is equal to 3, a is equal to 9. So 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. So here a is equal to 3. So we substitute x is equal to 3 sine theta. X is equal to 3 sine, that is x is equal to 3 sine theta. Then the differential of this one, d of x is equal to 3 into cos theta d theta. Now using this one, x is equal to 3 sin theta, so this is 9 minus x square is equal to 9 minus 9. X की जगह replace कर ले 3 sin theta. So this is equal to 9 common ले लें तो ये cos square आ जाएगा, क्योंकि 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. So इस एब्सोल्यूट इसको ख़त्म कर ले, 3 का अंडर रूट 3 आ जाता है, एंड cos square का अंडर रूट जो है वो cos theta आ जाएगा. So this is equal to 3 cos theta. Now evaluate this integral. So instead of this term, the numerator we can write 3 cos theta and x square. So squaring this is 9 sin square theta. So this is 9 sin square theta. And now the differential dx, this is the dx. Dx is equal to 3 cos theta d theta. So put 3 cos theta d theta. Now simplify this term. This is 3, 9 इसके साथ cancel हो जाएगा. ये 3 इसके साथ कैंसिल होगा. So cos theta is cos square theta, and this is sin square theta. Now this is cos square theta divided by sin square theta. So this is equal to cotangent square theta and d theta. Now we can use the identity, क्योंकि हमारे पास cotangent का इंटीग्रेशन है हमारे पास, लेकिन cotangent integration of cotangent is basically equal to the natural log of sin x. तो लेकिन हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं है. तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा minus 1. So instead of cotangent square theta, put here cosecant square theta minus 1 d theta. Now using the integration, now using the applying the integration, so integration of cosecant square theta is equal to cotangent theta, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट थीटा क्या होता है? दिस इज द कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. सो इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट थीटा, and integral of this constant is minus theta, minus as it is, the integral of this constant is theta, and this is the constant of integration. So now we have to find this angle theta. Since this is the indefinite integral, we must return to the original variable x. तो हमने x के दोबारा सब्स्टिट्यूट करना है, x हमने मालूम करना है, बट हियर दिस इज थीटा. सो ये अगर लेट्स सपोज दिस इज 3, क्योंकि हम जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है वो हमने लिया था x इज इक्वल टू 3 sin theta, 3, and this is sin 3 sin theta. So let this is the angle theta, and this is side hypotenuse, this is perpendicular to this, this side is perpendicular x, let this is x and this is 3. Then according to the Pythagoras theorem, this side, this base is equal to 9 minus x square under the root. क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूशन लिया हुआ है, और sin theta किसी का इक्वल होता है, is equal to the perpendicular divided by hypotenuse. So this is the perpendicular x and this is hypotenuse. So this base is equal to 9 minus x square by using the Pythagoras theorem. So this is hypotenuse square is equal to perpendicular का square and the base का square. तो इसको simplify कर ले तो ये हमारे पास 9 minus x square under root आ जाता है, base of this triangle. So what is cotangent theta?
cotangent theta, tangent theta is equal to tangent theta in this triangle is equal to perpendicular divided by base. Perpendicular divided by base. Okay, so this is perpendicular. So x divided by base, and this is the base. 9 minus x square. So tangent और cotangent एक दूसरे की उलट है. So cotangent theta is equal to base divided by perpendicular. So ये उलट हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस फॉर्म cotangent theta is equal to 9 minus x square base divided by perpendicular, which is perpendicular as x. And since sine theta is equal to x by 3, so from here you can take inverse of this function. So theta is equal to sine inverse x divided by 3. तो ये जो थीटा है, ये जो वैल्यू है और ये जो कोटेंजेंट है, इसकी जगह आप इस इक्वेशन में यहाँ पे इन दिस इक्वेशन इसमें आप पुट कर ले कोटेंजेंट थीटा की जगह वैल्यू और थीटा की जगह वैल्यू पुट कर ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा. So this is equal to this integral convert to this minus 9 a minus x square under root divided by x minus sine inverse x divided by 3 plus c. So this is the integral of this function by using the substitution. Another example, integration like that, x divided by under root of x square plus 4 dx. तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास इस तरह नहीं बन रहा कि यहाँ पे फंक्शन है, पावर है और इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है. So it would be possible to use the trigonometric substitution x equal to tangent theta, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह फॉर्म में आ रहा है x square plus a square. So what is a here? A is equal to 4, which we can write a is equal to 2 because a square, this is 4, so a square is equal to 4, so a is equal to 2. We substitute this x is equal to 2 tangent theta here, but direct substitution u is equal to x square plus 4 is simpler. ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है इस मेथड से. So let put x square plus 4 is equal to u, then the differential of this one du is equal to 2x dx, and now the integral of this one is 1 by 2 and this is x dx. So यहाँ से हमारे पास जो dx है ना, यहाँ पे x dx है, यहाँ पे x dx है. So from here this implies that du is equal to ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड बाई 2 कर ले, यहाँ पे हमारे पास x इंटू डी ऑफ x आ जाएगा. सो x dx की जगह रिप्लेस कर ले du बाई 2. सो ये du आ गया और ये 1 बाई 2 बाहर हमने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख लिया, एंड दिस इज द अंडर रूट ऑफ u. नाउ you can write the integration of this one 1 divided by under root of u, so and du, we can write this integral of this is ये ऊपर पावर ये 1 by 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, u की पावर -1 by 2 into du. so पावर एक इंक्रीज हो जाएगा और एक इस पर डिवाइड कर जाएगा. पावर एक इंक्रीज कर ले तो ये +1 आ जाएगा, तो u की पावर 1 by 2 और इस पर डिवाइड कर लें, 1 by 2 से डिवाइड कर लें, पावर एक इंक्रीज कर लें और इस पर डिवाइड कर लें प्लस c. सो दिस विल बी इक्वल टू ये 2 डबल डिवीजन है यहाँ पे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 into u की पावर 1 by 2 are under the root and plus c. So this is the integration. This is very easy. Then substituting x is equal to 2 tangent theta. So
Now using the back substitution, u is equal to x square plus 4, we get this integral. Another example, evaluate this integral x square minus x square. So this is the case where we put x is equal to a psi secant theta. So dx differential of this one, this is dx. We have to find this dx. So dx is equal to a secant and to tangent theta, because the differential of secant theta is secant and to tangent theta d theta. And this expression we can write in the simple form. Substitute x is equal to a secant theta here. So this will be a square into secant square theta minus 1, and we know this is the identity, secant square theta minus 1 is equal to tangent square theta. So इसको simplify कर लें, so this will be equal to square root ही cancel out हो जाएगा, यहाँ पे tangent a tangent theta is equal to a tangent theta, ये बन के इसे इस expression से. Now let this is theta and this is x, this is hypotenuse, and this is the base is equal to a, because we using the secant theta. पिछले जो हमने लिया था ये ट्रायंगल में हमने x इसको क्यों लिया, इसको क्यों लिया, और ये हमने क्यों इस तरह लिया, क्योंकि हमें पता होता है secant किस चीज़ का उलट है, ये cos 1/cos है, और cos जो है वो किस चीज़ का इक्वल होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है. तो secant जो है secant थीटा होता है ना, secant theta is equal to हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस होता है, डिवाइड बाय बेस होता है. ये जो हम फॉर्म लिख रहे हैं ना यहाँ पे x इक्वल टू ए secant थीटा, सो यहाँ से इसी फॉर्म से x इक्वल टू ए secant थीटा, सो secant थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a, ये फॉर्म बनना चाहिए हमारे पास इस ट्रायंगल में. ये साइड जो हम सपोज कर रहे हैं ना, लेट दिस इज x एंड दिस इज a, तो इससे हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूशन हम ले रहे हैं इसकी बेस पे हमने ये इसको इस तरह ले लेते हैं कि this is because this is secant is related with the cos of x, cos theta. So secant theta is equal to hypotenuse divided by base. इसलिए इसके जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे जो आ रहा है ना, इसको हमने हाइपोटेन्यूज है तो ये हमने इसको x कह दिया, और जो बेस हमारे पास आ रहा है दिस इज a, जो कि इसको हमने बेस को a कह दिया. So using this is the right angle triangle. So using the Pythagoras theorem, the perpendicular of this one, this side is equal to this is x square minus a square under the root by using the Pythagoras theorem. So now using the value of dx, a secant theta, tangent theta, d theta, this one, and using the value of this in x square minus a square under the root over here. So cancel out this a with this a, and tangent with tangent theta, and this is secant theta d theta. So this is very easy. This is the integration of secant theta and d theta, which is equal to ln of secant theta plus tangent theta plus, and this is the constant integration. Now we have to find x from here. So from this figure, the tangent theta is equal to, यहाँ पे टेंजन आ रहा है, x secant आ रहा है, तो इनको हमने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ x, क्योंकि बैक सब्स्टिट्यूशन हमने करना है. तो what is tangent theta? Tangent theta is basically equal to the perpendicular divided by base. So this is the perpendicular and this is the base. So this is equal to x square minus a square divided by a. So we have ln of x divided by a secant theta is equal to x divided by a. तो यहाँ पे secant theta की जगह x divided by a पुट कर लें, और टेंजेंट की जगह ये चीज़ पुट कर लें. ओके, इसी इक्वेशन में, इसी लास्ट इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस सी एज इट इज. सो इसको मोर सिंप्लीफाई कर लें, इसमें एक ए जो है वो कॉमन ले लें, और दिस इज एक्स प्लस दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट. तो लॉग की प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करें. लॉग जो है वो
डिवीजन जो है, दिस इज डिवीजन x प्लस दिस डिवाइडेड बाय इस डिवीजन को डिफरेंस में कन्वर्ट करता है. सो दिस इज ln ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट एंड माइनस ln ऑफ a यूजिंग द log प्रॉपर्टीज. log डिवीजन जो है वो डिफरेंस में कन्वर्ट करता है. So this is the evaluation of this integral. Now, as we know, ln of a, where a is constant, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को हम एक ही नाम दे सकते हैं. लेट सपोज दिस इज c1 इज इक्वल टू c माइनस ln ऑफ a. लेट दिस कांस्टेंट, क्योंकि एक कांस्टेंट से दूसरा कांस्टेंट माइनस कर ले तो कांस्टेंट ही आता है, और इस कांस्टेंट को हमने एक नाम दे दिया, दिस इज c1. So we can write this integral in the form of ln of x plus x plus x square minus a square under the root plus c1. Now this is solution 2. Another way to find the solution of this integral. Let x is positive, the hyperbolic substitution x is equal to a cos hyperbolic of t. तो ये सेकंड तरीका है. हम इसको अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर लें, हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन हम कर लें, x is equal to a cos hyperbolic of t, then we get the same result of this integral. And using the identity cos hyperbolic square y minus sin hyperbolic square y is equal to 1, जो cos और sin का होता है वो इक्वल हो, दरम्यान में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है. तो इसमें पुट कर लें x की जगह ये cos hyperbolic of t, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर cos hyperbolic of t माइनस 1, और cos hyperbolic t स्क्वायर cos hyperbolic t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टी स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा a साइन हाइपरबोलिक ऑफ t. नाउ dx ले लें, सिंस dx इज इक्वल टू a साइन हाइपरबोलिक ऑफ t dt, वी ऑब्टेन दिस वन. इसका dx ले लें तो ये dx की जगह ये पुट कर लें यहाँ पे, और जो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट है इसकी जगह a साइन हाइपरबोलिक t पुट कर लें, तो ये कैंसिल आउट हो गया. साइन हाइपरबोलिक t के साथ dt रह गया, and integral of dt is equal to t, and this is the constant of integration. Up what is t? T is equal to, this is cos t is equal to x divided by a. So यहाँ से cos hyperbolic inverse अप्लाई करें x divided by a, तो t की जगह आप cos hyperbolic inverse x से पुट कर लें. So this integral is equal to cos hyperbolic inverse x divided by a plus c. The next lecture we will discuss about the integration of rational function by partial fraction. Thank you.